टेक्निक देख लेते हैं फिर। Two outside books are there. One is R.D. Sharma, second is R.S. Agrawal. टेक्निक जो है वो समझ लेना, मेन टेक्निक जो है, और टेक्निक हो जाए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। Now type 1. These are the sums based on powers and indices. These are all sums based on powers and indices. Correct? See. Technique समझ लो, perfect. Nobody will write in between. Powers and indices. For example, we have 8 raised to 3 into 9 square into 81 raised to 3 by 4. This type of expression. Technique is what? Whenever we have these numbers, we will try to convert them in prime base. नीचे कोई ना कोई prime number or smallest base, and then we will convert them in power form, like 8. So 8 is written as 2 raised to 3. 3 is already there. Now one more thing. Here we will not do all the steps. Certain steps you have to calculate orally. Why? यही जो है आपका higher studies का base. Whenever you will go to 11-12 standard, you will be having JEE exam. JEE है, गुस्सेट है ना, जो एग्जाम्स आती है 11-12 के हाई लेवल के सम्स जो है उसका बेस यही है। करेक्ट? ध्यान से करना, ये हो जाए कि एकदम परफेक्टली आगे का बेस क्लियर हो जाएगा। 9th का ये एडवांटेज आपको 11th में मिलेगा। Remember, what is the technique? We are converting them in normal bases. Prime numbers like 8. So 8 means we will make 2 cube, 3 is already there. 9 means 3 square multiplied by 2. Now 81 is written as 3 raised to 4, but with this we have 3 by 4 power. Got it? 81 9 square मैंने नहीं लिखा. All I have made 3 square. This I have made 2 square, and then we can simplify them. We can cut these two numbers. So when we cut them, this expression is 2 raised to 9, second is 3 raised to 4, third is again 3 raised to 3. So the expression is 2 raised to 9. When base is same, we will add power 4 and 3, 7. ये बना. Got it? 4 and 3, base is same, we will add powers. Sometimes you may have negative powers. For example, root 2 power is 8. We want to simplify. The square root 2 means 2, 1 by 2 power, square root base, multiplied by 8. So 2 4s are 8. So it is 2 raised to 4. Answer is 16. Got it? Square root means 1 by 2 power, 2 4s are 8, 2 raised to 4, 16. This way we can do. Suppose we have expression 2 raised to n plus 1 minus 2 raised to n plus 2. Power simplifications. Remember, इस तरह के फंक्शन. So what we will do? N plus 1, n plus 2. Smaller power we have to take common.
स्मॉलर पावर इज n प्लस 1। क्यों? n में एक ऐड किया है, वहां पे n में दो ऐड किया है, so n plus 1 is the smaller power। suppose you take 2 raised to n plus 1 common, गया वो, तो यहाँ कुछ भी नहीं, 1 4 रह गया 1, और n plus 1 से n plus 2 डिफरेंस क्या है? एक नंबर का डिफरेंस है, into 2 raised to 1। क्यों 1? n plus 1 में एक ऐड किया तभी n plus 2 हुआ, इसलिए वो 1, and then it is written as 2 raised to n plus 1 multiplied by 1 minus 2 is minus 1। ये होगा उसका आंसर, ठीक है? 2 raised to n plus 1 minus 2 raised to n plus 2, this way, n plus 1 common, n plus 2। ऐसे सम से डायरेक्ट स्टेप्स करने हैं, हर एक स्टेप विल नॉट डू, करेक्ट? ऐसे आएगा सम्स में, मैं अगेन बताता हूं, बट वी विल डू सर्टेन एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट, कुछ कॉमन आपका होमवर्क में दे देगा, ठीक है? सो राइट डाउन हेडिंग आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल्स बुक, लिख दिया टाइप 1 सम्स, पावर्स एंड इंडाइसेस। Question is evaluate. Number 1. Write down 2 raised to 55 into 2 raised to 60 minus 2 raised to 97 multiplied by 2 to the power 80. We will simplify them. And 55 and 60. Remember, between these two multiplication, when two terms are in multiplication, we add powers. Basic should be clear, huh? Nobody will ask in between क्यों addition किया। 8th standard में किया है powers and indices, और जो 8th में पढ़े उनको पता है 8th standard ये कुछ चैप्टर में 20 दिन 25 days 1 month कराया है मैंने, because of this reason only। Powers and indices, when base is same, we will add powers. So this is power is 2 raised to 55 plus 60 minus 2 addition 97 plus 80. So this is what 2 raised to 115 minus 2 raised to say 97 and 80 115। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पावर इज सेम, सो बोथ विल गेट कैंसल्ड एंड अल्टीमेटली तो कैंसिल ही हो गए, सो आंसर इज 0। Got it? Write down 25 to the 3 by 2 into 343, sorry 243 the power 3 by 5 upon 16 5 by 4 into 8 to the power 4 by 3।
Now I have given hint. आगे hint दिया मैंने, अब शुरू करो. You will convert them in prime base. So 25 you will write 5 square into 3 by 2. Same way 243 किसी की power होगी, है ना? Cube, power 4, power 5 like that. करो, हो जाएगा. थोड़ा try करो. Yeah, Vidhi Patel. Vidhi. Give the step. What have you done? 5, 3 upon 2, 3 by 2. Okay, 5 square into 3 by 2. सर 243 का भी फाइंड नहीं किया. हाँ? 243 का भी फाइंड नहीं किया. 3 raised to 5 into 3 by 5. Correct? Upon 4. Yes. ठीक है, then you remove brackets. Remove करो और फिर same power कहीं ना कहीं कट हो जाएगी. So this is 5 raised to, this is 2 cut, है ना, on removing bracket. So you will get 5 cube. Here 5 will get cancelled. 3 cube. 4 will get cancelled. 2 raised to 5. 3, 2 raised to 4. So answer is what? 5 cube into 3 cube upon 2 raised to 9. Chalega. After that, no need to convert in numbers. No problem. You can do it, but power 3, 4 है वहां तक करेंगे. Much bigger power. No need to expand. Sure. Next one. It was there in 8th standard practice work also. You convert all in prime basis. 81. So 3 raised to 4, 16. Same way. Division multi करेंगे. And then minus power you make plus. तो ऊपर नीचे लेना है. करो थोड़ा बहुत. चलो.
what I have done, I have removed all the brackets, powers बना दिए, then you cut. Three raised to minus 3, 2 raised to minus 3. It is division will make multi. See, stop writing. This is okay. I have converted in prime basis. Now what? This division I have converted into multiplication. So division becomes multi. So number ऊपर नीचे हो जाएगा. Now नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो और एक बार ऊपर नीचे होगा. बट इससे पहले यहाँ पे ये दो कट हो जाएंगे. देखो 5 raised to minus 3 minus 3. है ना? Don't write. Wait. So what we get? 3 raised to minus 3 denote 2 raised to minus 3. Now inside bracket means this. Number is 2 raised to minus 3 denote 3 raised to minus 3. Now no need to convert positive. Why? All are negative and they get cancelled. 3 raised to minus 3 with this with this. So answer is सब कुछ cancel. Answer हो गया 1. Don't think that 16 का 2 2s are 4. वो नहीं होगा. Correct? Because if it is outside bracket, then only we can cut it. So what we will do? We convert them in prime numbers. So 16 means 2 raised to 4. 4 is 2 square. Again, then we will add powers. We'll do together. चलो साथ में करते हैं. Right now, next है. लिख दो 16 मतलब क्या आएगा? 2 raised to 4. साथ में है 2 raised to n plus 1. Minus 4 means 2 square into 2 raised to n. Same way denominator 16. 2 raised to 4. 2 raised to n plus 2. Minus 2 into 2 raised to n plus 2. Now we can add powers.
raised to n plus 1 and 4, so n plus 5 minus 2, 2 plus n, so we write it as n plus 2, n पहले लिखा, सेम वे तीनों में बना लो, क्या बनेगा? Two raised to 4 n plus 2, so denominator 2 raised to n plus 4 and 2 is 6 minus 2 raised to n plus 2 and 1. ठीक है? Why? 2 के ऊपर कुछ भी नहीं means power is 1, so 1 and 2 that becomes 3. Now what? दोनों में से छोटी पावर कॉमन ले लेंगे, n plus 5 n plus 2, the smaller is n plus 2, तो plus 2 कॉमन आया तो 2 के बाद 5 पहुंच रहा है, तो 2 से 3 4 and 5 तीन नंबर का डिफरेंस है। वरुण यहाँ समझ लो, वरना बाउंसर जाएगा, कॉपी करना नहीं है, अगर ये सोचा बैठे बैठे कॉपी करे तो गए, हाई लेवल के है, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैंने पढ़ाया काफी लंबे टाइम तक, बाद में रिवाइज कराया मैंने, दिव्यांग सर अभी करा रहे हैं, इसके बाद मैंने ये लिया ताकि कॉन्फिडेंस आए। n plus 6 n plus 3 स्मॉलर इज n plus 3 कॉमन, 3 से 6 जाना है तो कितना फर्क आएगा, 3 से 4 5 and 3 6 3 numbers difference. So what we will do, don't write, we will take 2 raised to n plus 2 कॉमन दोनों में से, so n plus 5 तक पहुंचना है, तो n plus 2 से plus 5 means 2 raised to 3 minus 1, correct? Why? 2 raised to n plus 2 we have taken out, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, nothing means 1, denominator n plus 6 n plus 3, smaller power n plus 3 we will take common, 2 raised to n plus 3, 3 to 6 we want, so it is 2 cube minus 1, and 3 से 4 5 and 6 3 का difference है। Now next step what will happen, this is 2 raised to n plus 2 in bracket, 2 cube is 8, 8 minus 1 7, denominator 2 raised to n plus 3, साथ में 8 minus 1 7, got it? So from both 7 7 will get cancelled, so 7 cancel हो गया तो क्या रहेगा देखो। Now next step we can write it as, this is 2 raised to n plus 2, this is 2 raised to n plus 3. Now what? Power का simplification, we can take this up or this down, plus 3 is bigger power, so जनरली ये नीचे आएगा, बट जरूरी नहीं, आप ऊपर ले जाओ तो भी चलेगा, बट ब्रैकेट यूज करेंगे। n plus 2 minus n plus 3, 2 raised to n plus 2 minus n minus 3, and it cut, this is 2 raised to 2 minus 3 minus 1, 2 raised to minus 1 means 1 by 2, ये आया आंसर, got it? Once again n plus 3 goes up, so minus, bracket remove किया, minus n plus minus minus, minus n plus n cancelled, 2 minus 3 is minus 1, 2 raised to minus 1 means 1 upon 2, correct है ना? बढ़िया सा कर लो, यहां तक तो हमने किया ही है साथ में। डरना नहीं आए तो चलेगा, 2-3 बार और करेंगे, सम्स में पेपर में कहीं आएंगे, हो जाएगा, पहले से डर नहीं जाता।
Finished. Asta Rathod, done. Aryan Rathi, finished. Samir, okay. Next one, it is write this. Next one, prove that. Prove that sum. We'll do from left hand side. Remember, whenever you have proved that, we will begin with one side. So LHS, and write again LHS, 2 raised to n, 2 raised to n minus 1. Denominator, 2 raised to n plus 1 minus 2 raised to n. Now, Aryan Rathi, mic on karo. Yes, sir. Numerator from this two, which one is the bigger one? Bigger n minus 1. Denominator, which one is bigger one? Denominator is 2 common. बड़ा कौन सा है वो मैंने पूछा। Sorry, बड़ा n plus 1 in denominator. और न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है? Numerator में n minus 1. ओके जीशान माइक ऑन करो। Which one is bigger term? Numerator, Zishan? Sir, numerator में 2 raised to n is bigger one because n minus 1 में वो एक कट हो जाएगा ना तो small हो जाएगा n raised to n 2 raised to n. ठीक है, and denominator bigger is n plus 1. Now what we are doing? दोनों common है, we take smaller power common है, दोनों में छोटी power common आएगी, correct? So from numerator we will take this term common, n minus 1, n minus 1 is common, and in denominator n plus 1 2 raised to n is smaller, we will take this common. Don't write. So what we will get on taking common? 2 raised to n minus 1 common. n minus 1 से n एक का ही difference है. So 2 raised to 1 plus 1. Why? n minus 1. n minus 1 and 2 raised to n. Difference कितना है? 1 का. नहीं पता चले तो आप इस तरह कर सकते हैं. n minus 1 is n minus n plus 1. This is का difference आया 1 का. इस तरह. Same way, denominator 2 raised to n is the smaller number. So 2 raised to n common. This is common. So here we will get 2 to the power 1 minus 1. Now, numerator, this is 2 raised to n minus 1. Bracket देखो 2 raised to 1 is 2 plus 1, 3. Denominator is 2 raised to n. 2 minus 1 is 1. Okay? So what we have got? We have got 2 raised to n minus 1 into 3, 2 raised to n. Now n minus 1 and n, we will simplify numer-deno. So this 3 will remain unchanged. नीचे क्या हो जाएगा? 2 raised to power n minus n minus 1 है ना? ये डायरेक्ट नहीं करेंगे because bracket is there. We'll take it down. Multiplied by this square bracket is 1. So what we are getting, numerator is 3, denominator 2 raised to n
minus n minus minus plus 1 into 1 minus n plus 1 plus n gone. So it is simply 2. 3 by 2. 3 by 2 is the RHS. यही हमें प्रूव करना है. ठीक है? See once again, ये तो पता चला होगा, smaller power we take common. है ना? नहीं पता चला तो ये रहा reason I have explained. n minus 1, n plus 1. So 2 raised to 1 is 2 plus 1, 2 raised to 1 is 2 minus 1. तो नीचे रहेगा 1, ऊपर है 3. But again, this 2 powers, 2 raised to n minus 1, 2 raised to n. So n minus 1 नीचे जाएगा, n minus 1. So it will become 2 raised to 1, 3 by 2 बन जाएगा. Correct? है ना बढ़िया? करो. लगता छोटा ही है बट. This is 9 to the power 3 by 2 minus 3, 5 raised to 0 minus 1 upon 81 full bracket minus 1 by 2. Now see, I'll give hint. 9 means 3 square, 3 by 2, Toto card. 5 raised to 0, 0 power of any number is 1. So this is 1 only. 1 into 3, 3. Third step, when 81. 81, but 1 by 2, अकेला है. 81 we can write 3 raised to 4 into minus 1 by 2. 3 का base बन जाएगा. Correct? करो, 3 terms है. Get the answer हो जाएगा. Five raised to 0 is 1. Toto card. Totals of 4. 3 raised to 3 minus 3. 1 upon 3 raised to that. Toto card. 3 raised to minus 2.
minus 3 raised to minus 2 goes up, it becomes 3 square. So it is 27 minus 9 minus 16. 0 आएगा, चेक करो. एक्सक्यूज मी सर. अब बोलो. सर वो 9 कहाँ से आया? सर 3 की पावर तो है ही नहीं. हाँ, सही बात है, 3 ही रहेगा. This is 3 only, right? So this is 27 minus 19. 8 आएगा. Good. हाँ संतोष, क्या हुआ? लास्ट में भी 3 रेज़ टू 2 है तो 9 नहीं आएगा. 27 minus 3 minus 9. हाँ सही बात है, मैं भी क्या कर रहा हूँ. 3 क्यूब, 3 स्क्वायर इज 9. 27 minus 9 बराबर है minus 12. 15 आएगा. देख लो, देख लिया. और कुछ है? सी. प्रैक्टिस करते रहना, ये नहीं, बट टेस्ट का जो बताया है वो आपका 16 अक्टूबर से मुझे टेस्ट लेना है. अब तक जितने भी पोर्शन हुए सभी फुल कोर्स, ठीक है. अबाउट 8 to 9 चैप्टर्स. सो कंटिन्यूस 4-5 दिन आपका टेस्ट ही हो जाएगा. मैथ्स, देन एक दिन का गैप, दैट ड्यूरिंग वन डे यू हैव टू प्रिपेयर साइंस, वन डे प्रिपेरेटरी रिव्यू, एसएसटी, एंड देन आफ्टर वन डे इंग्लिश. ये है सीक्वेंस, ठीक है. मैथ्स पहले इसीलिए रखा है, मैथ्स की मैं प्रैक्टिस कराऊं अच्छी तरह, और तुरंत ही आपने टेस्ट देना है, तो वो कर देना, ठीक है. आओ जाओ, बाय बाय, जय हिंद. होमवर्क कुछ भी नहीं, वो प्रैक्टिस करो, ये थोड़े सम्स हो जाए. आफ्टर दैट सर सिलेबस. सर बाय सर. सर आपने आओ कहा जाओ. था सिलेबस लिखा होगे. यस सर. Bye, सर सिलेबस. एक्सक्यूज मी सर. एक्सक्यूज मी सर. सॉरी सर. हाँ बोलो. सर सिलेबस. अरे एक मिनट.